Good morning. Welcome to Vanik Smart Classes. आज हमें डिस्कशन करिबा RI main computer memory based questions. First question is that DAS is a window utility program that locates and eliminates unnecessary fragment, rearrange file and unused disk places. DAS is a window utility program that locates and eliminates unnecessary fragment and rearrange file unused disk places to optimize operations. ये गोटे यूटिलिटी प्रोग्राम आर आंसर आम करवा डिस्क डिफ्रैगमेंटर। तो ये जो चारिटा यूटिलिटी अच्छी तो डिस्प्ले क्लीन अप भी गोटे यूटिलिटी, रिस्टोर भी गोटे यूटिलिटी, बैकअप गोटे यूटिलिटी, बट एठी हम करिया रीआर्न द प्रोग्राम फाइल आंसर करवा डिस्क डिफ्रैगमेंटर। इट्स ए स्पेशल टाइप ऑफ यूटिलिटी यूज्ड टू locates and eliminate unnecessary fragmented files, rearrange files and unused disk spaces to optimize the operations. So right answer is disk defragmenter. Next question, the input device to be used to get printed diagram into computer is, तो printed diagram पाए basically हमें कौन use करिबा? ना हमें स्कैनर यूज करिबा। तो स्कैनर इज ए इनपुट डिवाइस यूज्ड टू गेट प्रिंटेड डायग्राम इनटू कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर इज, तो कंप्यूटर हमें को ऑपरेशन करिबा बेसिक ऑपरेशन बेसिक ऑपरेशन कौन कौन करिबा ना स्टोरेज एंड रिट्राइवल करि परिबा, लॉजिकल ऑपरेशन करि परिबा, अरिथमेटिक ऑपरेशन करि परिबा। तो आंसर करिबा ऑल द अबव, कारण कंप्यूटर ये सब गुड ऑपरेशन हम करि पारुथिबारु तो आंसर करिबा ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट ओन्ड बाय लाइसेंस बाय कंपनी? आ भितर को ऑपरेटिंग सिस्टम कंपनी नो लाइसेंस द्वारा नहीं, तार आंसर होइछ विंडोज। Next question, dash is a graphical object used to represent commonly used applications. Dash is a graphical object used to represent commonly used applications. So graphical object कोटा generally हम use करते हैं GUI based operating system। आंसर करेगा GUI, that is graphical user interface। तो graphical user interface रे graphical user interface, so GUI based is a graphical object used to represent commonly used application। जनरली हमें विंडोज एप्लीकेशन ने जो ग्राफिकल ऑब्जेक्ट यूज करू ताको कहा जाए आइकन। तो एठी आंसर करेबा GUI is a special graphical object used to represent commonly used applications। Next question, file does think the size of a file so it requires less storage space? File does thinks the size of file so it requires less storage space, that is compression. Compression is a special utility to shrink the files having less amount of storage. Questions पढ़े, when huge amount of files are stored in a small amount of space, that is file compression। और disk defragmentation already हमें discussion करी थे before question ने। तो scanning is a process to find bad sector in hard disk drive। तो आंसर एटी कौन करे ना compression। Compression is a special utility in the program to shrink the size of files so it requires less storage spaces। आउ गोटे बार alternative question आसे, when huge amount of files are stored in a small amount of space, that is also compression। Next question is the file that is linked with another email and sent to the receiver to the email referred as, जदि गोटे ईमेल ने आउ गोटे फाइल को हमें लिंक करबा तो ताको कौन कहबा ना अटैचमेंट कहबा। तो अटैचमेंट है राइट आंसर।
the file that is linked with another email and sent to the receiver of the email, that is attachment. Which feature is used to duplicate controlling formatting? Duplicate a control formatting in what features? What आमे को features साहाଯ୍य रे जे duplicate करी परिया सेटा होचे painter. को painter ताको दी format painter. Format painter, it's a special type of tool used to duplicate control formatting. जोटा को हमें जो formatting चाहिए ताको हमें copy करी परिबा और shortcut भी अछि control shift plus c copy करले control shift plus v माइले paste formatting ए साजरे हमें करी परिबा. आंसर करिबा format painter. Next question है in data sheet view what appears at the top of each column. এটা 8 रो क्वेश्चन आछे. In data sheet view what appears at the top of each column. तो top of each column माने जेतला हम टेबल टे तैयारी करिबा तो आगे रहबो कोन ना suppose name, role, physics, chemistry, math, total एमते कले. तो ए जो top कौन कुआ जाए को ना को कुआ जाए फील्ड. आंसर कौन करिबा ना फील्ड ने. किंतु जदी रोल नंबर नेम गोटे लिखले रोल 1 25 35 45 टोटल वाले आको गोटे कौन कहले ना रिकॉर्ड. रिकॉर्ड भी क्वेश्चन आसे रो attribute of a table is known as that. Or alternative question आसे column attribute of a table is known as field name. Where row attribute of a table, row attribute of a table is known as record. A record alternative question आते. Record is also known as tuple. Record is also known as tuple. Record को tuple करे सेठी आंसर करिवा field name काहे ना क्वेश्चन अछि data sheet view what appears at the top of each column. तो top of each column माने कोन थाए ना सेटा होछि field name गोटे थाए. Next question la which of the following shortcut used to check spelling grammar when required. Which of the following shortcut is used to check spelling when required. आ भितर को शॉर्टकट की सहाय्य रे हमें स्पेल चेक करि परिया. देखो प्रथम शॉर्टकट अछि एग्जिट पाई. सेकंड शॉर्टकट अछि प्रिंट प्रीव्यू पाई. थर्ड शॉर्टकट अछि गो टू डायलॉग्स पाई आउ F7 अछि स्पेलिंग एंड ग्रामर पाई. स्पेलिंग एंड ग्रामर तो आंसर को करिम ना स्पेलिंग एंड ग्रामर. Which of the following shortcut used to check spelling when required, that is in case of what document हमें आंसर करिबा F7. F7 is only used for to help spell and spelling and check spelling and grammar. Next question, which of the following provides the auto calculate command and the toolbar in MS Access. आ भितरु Access रे auto command पाई को गुडा ऑप्शन सुडा छी ना तमे डिफॉल्ट होजी सम हे पारिबो, काउंट हे पारिबो, मिनिमम भी हे पारे. तो आंसर करबा एठी ऑल द अबव. जदी बोला डिफॉल्ट ऑलवेज के थाने सम थाए. डिफॉल्ट आ सम थाए किंतु चाहिले सम हे पारिबो, काउंट करि पारो, मीन करबा तो आंसर करबा ऑल द अबव. Next question, in MS Access which operation copies a backup file from storage? Which option used to backup file from the storage back to the computer? इथे हम आंसर करिवा करना restore. Next question, which of the following is used to MS Access to close the active window? Active window को close करा खेले कोई शॉर्टकट दरकार ना. to close the active window जनरली हम कोई शॉर्टकट यूज करना कंट्रोल W is special used for close the active window.
Next question, in axis which view is used to create and modify the structure of a form. जितने हमें form तैयारी करिबा को view रे हमें form टाକୁ change करि पारिया ना design view रे नुहे data sheet view रे नुहे none of the हेबनी form design हमें कौन change करि पारिबा ना to change the structure of a form. Next question, concatenation of text can be done using dash. ना भी अलग क्वेश्चन पड़े concatenation operator is dash. तो आप इधर का साझा में concatenate operation करि परिबा. Concatenation operator is and symbol and साझा में concatenation operator करि पारे लिखि पारे हम equal to A1 and A2 तमने A1 A2 सहित concatenating ही जीवो तो सेति में आंसर करिबा हमें concatenation operator. It's a Excel question. Next question, which area in Excel window allows entering a single formula? तो को एरिया रे हमें फॉर्मूला एंट्री करि पारिबा को एरिया रे फॉर्मूला एंट्री करि पारे ना टाइटल बारे करि पारिबा नहीं काहे कि ना डिफॉल्ट टाइटल शो करे टाइटल कौन था ना बुक 1 मेनू बारे भी करि पारिबानी तो फॉर्मूला बार इज ए स्पेशल टाइप ऑफ टूल इन एमएस एक्सेल यूज्ड टू कैलकुलेट आल्सो डिस्प्ले द नेम और फॉर्मूला बार डिस्प्ले करू थेबारु आंसर कोन करियो ना फॉर्मूला बार इज ए एरिया इन एक्सेल व्हिच अलाउज to entering a single formula. Next question, multiple calculation can be done in a single formula using dash. ना कोथरे हमें multiple calculations करि पारिबा तो multiplication calculation can be done in a single formula, that is array formula. So array is a special type of data type used to calculate multiple calculations. आर भी आउट क्वेश्चन इस आस्ते ये array is a dash memory structure. array is a dash memory structure. जेतले memory structure करिवो ताको दे linear, homogeneous and contiguous. linear, homogeneous and contiguous. पूछने से array is a dash data structure. array is a dash data structure एठी करियो linear data structure. एक क्वेश्चन आसे dash variable store more than one value at a time. dash variable store more than one value at a time. ये जगह में आंसर करिबो array variable store more than one value at a time. आ गुडी variable क्वेश्चन आसे dash variable initialize only once. dash variable initialize only once. ये टाइप रो क्वेश्चन आंसर करिबो static variable initialize only once. मात्र थरे ही initialize ही पारिबो. तो एठी कौन थिला ना मल्टीपल कैलकुलेशन कैन बी डन इन ए सिंगल फार्मूला, दैट इज array formula. Next question, to select an entire column in MS Excel you can press. To select entire column in MS Excel you can press. यदि हमें कंट्रोल सी मारिबा ये कॉपी होबो सेलेक्ट होबो नाही. यदि कंट्रोल प्लस डाउन आरो मारिबा माने मूव टू द नेक्स्ट सेल यदि कंट्रोल एस मारिबा सेव हो किंतु एठी आंसर का ओरिया नन देबो सेमति किछि शॉर्टकट एठी मेंशन हेनी. टू सिलेक्ट एन एंटायर एमएस एक्सेल करिया पई तार शॉर्टकट होची कंट्रोल प्लस स्पेस बार. कंट्रोल प्लस स्पेस बार इज यूज्ड टू सिलेक्ट एंटायर कॉलम इन एमएस एक्सेल. यदि कॉलम पई यूज करले कंट्रोल स्पेस बार, रो पाई यूज करेबा शिफ्ट प्लस स्पेस बार. तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार यूज टू सेलेक्ट a row in MS Excel. अब एठी तेरा टू सेलेक्ट एन एंटायर कॉलम इन MS Excel एठी किछि न थिवार ऑप्शन तो आंसर करले नन. To return to the remainder after number divided.
To return to the remainder after number is divided by division in Excel, we use the dash function. को function साहाय्य आमे remainder को count करि परिबा. देखो राउंड फंक्शन साहाय्य तो हेई परिबानी पार्ट माने फैक्टोरियल नंबर, डिवीजन मान डिवीजन, एठी मॉड साहाय्य आमे कोन काउंट करि पारा, रिमाइंडर काउंट करि पारा. तो आंसर करिबा मॉड फंक्शन. Which is not the function of edit clear command. Which is not the function of edit clear command. Option गोटे थाए हमर edit hyphen clear hyphen. And कोन थाए ना delete contents थाए, delete cells थाए, delete formats थाए, किंतु delete notes ना थाए. तेनो आंसर कोन करिया ना B delete note. जेहेतु which is not पचार तो आंसर करिबा delete notes. What do we call the chart that shows the properties of how one or more data elements related to another data? Stop हो जाउची पळे जाउची पाउन. Yes. लाइव चलते ना से तारा होउनी काम करने. ऐसे 12टा काम करने ना. What do we call the chart that shows the properties of how one or more data elements answer la pie chart. What your logo in the same position on the every slide automatically insert on this slide. I'm going to now. What your logo in the same position on every slide automatically insert on the handout master, note master, slide master, now all the above. Answer करिबा slide master. Slide master रे जदि चाहेबा ना गोटे लोग सब slide रे same position रे print करे भेले तुमे slide master यूज करिवो. Objects on the slide that hold text are called dash. Objects on the slide that hold text are called placeholder. On the placeholder. Which of the following provides some means of printing our features notes like miniature slides on the printed page? एठी हम आंसर करिबा ऑडियंस हैंडआउट. Which command brings you to the first slide in your presentation? प्रथम स्लाइड को आसिया पहले कौन यूज करना? कंट्रोल प्लस होम. This is control plus home. Allows you to move to the first slide. यदि लास्ट स्लाइड को जिबा ताले यूज करिया कंट्रोल प्लस एंड. It allows you to move to the last slide. So जेहेतु क्वेश्चन is to bring to the first slide, आंसर करिया कंट्रोल प्लस होम.
How can you quickly reinsert a deleted folder placeholder in a master view? It हम use करिया reapply the footer placeholder, reapply the footer placeholder. Which of the following can you use to add time to the slide in a presentation? आदर को ऑप्शन साहाଯ୍य रे हमें PowerPoint रे slide timing दे पारे सेटा होचे हमर rehearse timing साहाଯ୍य रे हमें slide रो timing दे पारे. Select all the boxes of an organization chart. सबु जगह हमें select करिया को हेले कौन यूज करिबा ना clicking and edit and select all आदर भी करि पारिबा. Right click the chart background and then click select all आदर भी करि पारिबा. तो press and hold shift key and then click आदर भी करि पारे तेरे आंसर करिबा all the above. आ भितर जो ऑप्शन तुमे चूज कले तुमे select करि पारे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट रो. Which is not in MS Word. आदरे MS Word रो को फीचर्स ता नहीं. Italic MS Word गोटे फीचर्स शॉर्टकट ला कंट्रोल प्लस आई. मैग्नेटिक टूल किंतु फीचर्स का दर नहीं ना. मैजिक टूल MS Word नहीं. फॉन्ट अच्छी, बोल्ड भी अच्छी. बोल्ड जेमती कंट्रोल बी, फॉन्ट ओपन करले कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ. किंतु मैजिक टूल की फीचर्स MS Word ने तो आंसर करले मैजिक टूल. What is the blank space outside the printing area on a page? What is the blank space outside the printing area on a page is called that. The printing area जो page था तक कौन को आ जाए ना actual तक कौन को आ जाए ना margin को आ जाए. और header footer तो तुम्हें जानी चाहिए header ला top रे display होगा, footer ला bottom रे display होगा, clipart ला animated picture उड़े थाए तक कौन दी clipart. तेरे margin हो जी border रा boundary area थाए transfer कर ले margin. Next question ला formatting is performed on dash. कोथरे हमें formatting करी पारिबा. Formatting is performed on dash. ना कोथरे formatting करी पारिबा text रे करी पारिबा, table रे करी पारिबा, तो menu रे करी पारिबा नहीं. सेति पे आंसर ला both A and B. आंसर करिबा both A and B. हमने table रे formatting करी पारिबा और text रे भी करी पारिबा. The ability to combine name and address with the standard document is called as. The ability to apply name and address in the both cases standard document is just na को option साहाଯ୍य रे name and address दीटा को merge करी पारिया. Name और address कोथरे merge करी पाना ना mail merge. Mail merge गोटे special tool देची MS Word रे यूज टू add कौन कौन add करिवो ना डॉक्यूमेंट सहित हमें एड्रेस ऐड करि पारे. ए दीटा को मिसेगी हमें सेंड करि पारे सेति पे आंसर करिवा मेल मर्ज. मेल मर्ज इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फीचर्स यूज्ड टू अप्लाई which can be used for quick access to commonly used commands and tools. Dash option is used to quick access some commonly used command. ये जगह हम करिबा toolbar. यदि commonly used थिबो toolbar आंसर करिबा toolbar. Dash shows the status of a file थिले करिबा status bar. Dash shows list of command थिले करिबा menu bar. Dash bar shows at the top of application window थिले करिबा title bar. एठी क्वेश्चन थिला जे dash can be used quick access to commonly used commands and tool, that is answer करिबा toolbar. Which bar shows the current position as for the text goes. जितला में किछि लेखुचे तार पोजीशन को जगह रे शो करे ना को जगह रे शो करे ना स्टेटस बार रे शो करे. कैन टाइटल बार कौन शो करे ना टाइटल ऑफ ए फाइल. मेनू बार शो करे कौन ना लिस्ट ऑफ कमांड. स्क्रॉल बार ला मूविंग पाए तनो क्वेश्चन ने रहला कौन आंसर ना स्टेटस बार शोज द पोजीशन as far the text goes. Next question है what are the different views to display a table.
हम एतले टेबल डिस्प्ले करबा एटा होची एक्सेस रो क्वेश्चन एमएस एक्सेस रो जेतले हमें टेबल डिस्प्ले करबा व्हाट आर द व्यूज टू डिस्प्ले टेबल्स को व्यू रे हमें देखि परबा ना डाटा शीट व्यू रे देखि परबा डिजाइन व्यू रे भी देखि परबा और पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट व्यू रे देखि परबा तो एठी आंसर करबा ऑल द अबव ता माने व्हाट आर द डिफरेंट व्यूज टू डिस्प्ले टेबल डिजाइन व्यू डाटा शीट व्यू पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट व्यू ऑल द अबव आंसर करबा ऑल द अबव editing means editing a document consists of reading through the document then you have created then तामने editing करि साइला परे तुमे कोन करिवो ना correcting your errors कारण editing माने हला change an existing document जदि किछि डॉक्यूमेंट रे चेंज करिबार थिबो सेति पे हम कोन यूज करबा ना editing तो सेति पय हमें प्रिंटिंग करि पारेबनी कि सेविंग करि पारे जदि गोटे डॉक्यूमेंट को ओपन कले तो तापरे कोन करे एडिटिंग माने करेक्टिंग योर एरर्स आंसर करबा करेक्टिंग योर एरर्स नेक्स्ट क्वेश्चन ला द इंटरनेट अलाउज यू टू इंटरनेट कौन पर यूज करा जाए ना इंटरनेट अलाउज यू टू सेंड इलेक्ट्रॉनिक ईमेल थ्रू सेंड हमें इलेक्ट्रॉनिक मैसेज सेंड करि पारेबा व्यू वेब पेजेस आदर में हमें वेब पेजेस देखि पारेबा कमेंट टू सर्वर ऑल अराउंड द वर्ल्ड एटा हमें करि पारेबा connect to the server all around the world तेणु आंसर करिबा all of these facilities are used in internet सेति पय the internet allows you to आंसर करिबा all the above next question which of the following option concerned with the people related to the computing process which of the following option is concerned with people related to computing process सेटा करिबा हमें humanware computing process आको humanware कहै जाय और आको peopleware भी कहि परिबा peopleware देखो हार्डवेयर हला अलगा इट्स ए टचेबल एंड टैंजिबल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर हला इट्स ए इंटैंजिबल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम firmware hela replacing hardware is software is used called firmware तेनो गोटे ही रहला आंसर करना humanware आंसर करिया humanware which of the following option is concerned with people related to computing process आंसर हला humanware next question which of the following is considered as both input and output device आ भितर कोडा हमें input output device both कहि परिया ना printer हला it's a purely output device स्पीकर हला आउटपुट डिवाइस मॉनिटर भी जाए आउटपुट डिवाइस रे किंतु हमें मॉडेम को कहि पारा बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस तो आंसर करले सी इज द राइट आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस दैट इज सी which of the following is the second largest unit of RAM RAM रो second largest unit कौन ना second largest unit of RAM is gigabyte एना RAM zero starting आसला 1968 रे रॉबर्ट डेनार्ड फर्स्ट RAM इंट्रोड्यूस करथिले 0.5 MB रो ड्यूरिंग थर्ड जनरेशन सेकेंड लार्जेस्ट यूनिट के ना एमबी पर तो सेकेंड लार्जेस्ट यूनिट जीबी तो आंसर है gigabyte इज द सेकेंड लार्जेस्ट यूनिट ऑफ RAM this is about all 40 questions thank you बंद कर एबे लगेबो ना कोन लगेबो एबे लगे जनो खाजी पळे कमेंट कोन लिखु मु देखुनी बंद कर